अच्छा जी। ओके, नमस्ते। आज का सभा शुरू करते हुए त्रिवेणी के इस भाग में आप सबका स्वागत है। बौद्धिक नैतिकता, सचेत क्रिया और आंतरिक दिशा सूचक। न्यूटिक ethics, the inner compass of conscious action, is the subject. Katalina ji, welcome. She is the main speaker. MRINAL ji as a Marathi speaker, and Archana, welcome as Hindi speaker. And Harshvardhan ji, please go ahead with the universal prayer. Yes, Taralji. Thank Thank you. Let us begin our universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all all in in oneness. oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is is also also one one with every every other. other. Shanti, shanti, shanti. थैंक यू हर्षवर्धन भाई। एंड हम आज की शुरुआत करते हैं कैटरीना जी से। आप शायद अपना पीपीटी बताना चाहेंगे, उसके पहले मैं एक छोटा सा इंटरव्यू आपका परिचय देना चाहूँगा। कैटरीना जी is an author, poet, translator, editor, international lecturer of TS. She is based with her family. We all know Shikharji and the little one at Adyar, India. She was born in Colombia and was naturally drawn towards the global cultures and all the ideas, and has always wanted to be citizen of the world rather than citizen of any one place. She joined Theosophy TS in 2006, inspired by her parents' spiritual path and their shared expression of the sacred wisdom for many traditions. She feels that TS का member बनना घर लौटने जैसा है. That to become a TS member is like returning back home. She is also secretary of School of Wisdom, Adyar, and takes part in several international conventions. She has traveled all over, widely over the world, especially America, Europe, and Asia, where she has not only spoken as a speaker, but also her articles have been there in different magazines. She is also very active with young theosophists, and world over, she is connected with them. She has an honors degree in literature, post-graduation diploma in cultural management, and masters in education. And her professional journey spans with teaching, television, cultural projects, translation, and publishing. We welcome you, Katalina ji. Once again, on Triveni, you always come with wonderful subjects, and so is this one. Please go ahead. Thank you, Taraji. Namaste to all your friends. And thank you for this kind invitation and also for organizing this meeting every week, Taraji and Archana ji. And
thank you today also to MRINAL ji. I have always a difficulty pronouncing your name, I'm sorry. MRINAL. MRINAL. And to all the present here, it is really a joy to be here. And as I always like to begin to bring us together, I'm just going to ask you to close your eyes for some minutes or even seconds. Taking a deep breath and visualizing our heart that is connected with everyone's heart here in this meeting and in the entire globe. This connection, heart to heart, bring us closer in spite of time, distance. So let's stay for some seconds in this full presence with gratitude and radiating love and peace. Thank you. Well, I'll try to share my screen. I hope it works. Let's see. Is this working? Yeah? Yeah. Yeah. Okay, so let us explore together this topic, noetic ethics, which I called the inner compass of conscious action. As a timeless idea that feels especially relevant in these times. We are in a world full of rapid progress and global connection. Questions about how to live well and treat others matter more than ever. Ethics is often seen as rules from our religion or law or society, but when we speak of ethics from a noetic perspective, it becomes something more personal and inspiring. It's like an inner guide that is worth exploring, so let us explore it together. I don't know why my screen is, my face is coming like purple, but okay, let's see. A strange filter. Let me see if maybe I remove the background. Yeah. Nope. Nope. Let's see. No. Oh, this is very strange. Yeah. It's like an aura. Yeah. It's interesting. Okay, let's keep it like that. It will be like a fashionable screen or something like that. Okay, let's continue. So, yeah. So the word noetic comes from the Greek term noesis, which is whose meaning is inner knowing or insight. Noetic ethics turns us inward, guiding choices through intuition and truth rather than external rules, as it is always believed. It is empowering, but it's also a responsibility. It depends on us, not of external things. And ethics is the study of right and wrong, shaping how we act with fairness and responsibility. But true ethical living requires more than rules. It calls for insight, intention, and a deeper understanding of ourselves and our place in the world. There is an article by HPB herself that is entitled Noetic Action. And she writes in that article that occultism regards every atom as an independent unit. And this idea suggests that consciousness exists in everything. So within us lies an immortal essence, the divine man, or man with capital, or nous.
and the higher mind, manas, that is the higher mind, manas, that reflects this deeper source. So this now knows, this higher divine mind reflects the source that unites us all. And in the article, HPB distinguishes between the higher, which is the noetic mind, that is aligned with the truth and the spiritual awareness, and the lower or psychic mind, which she says to be linked to the personality and emotion. So there are two aspects: a higher mind, noetic one, and a psychic mind that is linked to the personality. We will see in the next slide the septenary constitution of human being. But before that, I wanted to add that in the theosophical glossary, knows this higher, this essence, immortal essence, is what she defines like divine consciousness in humans. And one of the Greek philosophers, Anaxagoras, described it as the intelligence behind all movement. And in India, it's called Jivatma, the one life. So now I'm presenting the septenary constitution as presented by HPB in the Key to Theosophy. So it shows that the higher aspect, so we have the personality, which is the lower quaternary, that is new with each successive incarnation. And we have the individuality, that is the superior triad, that is immortal and enduring. So that higher aspect is constant, while the lower personal mind, it is shaped by samskaras, past actions, and skandhas, tendencies that form the transient personality. And usually in our daily life, we identify ourselves with this lower self. Yet we can rise toward the noetic or sink into the physic, into the psychic, we have that possibility, whether we raise ourselves or we sink into the lower. And this choice that we have as human beings is central to the spiritual life. The higher self uses the vehicles of the lower self to work in this life of manifestation, as we know. But since it is, we know that the matter comes from the subtle matter to the less subtle matter here in the lower place. So in that sense, for the higher self, using these more dense vehicles, it seems like its voice is very subtle and often drawn by the desire of the lower quaternary. So we can say that the psychic part, the psychic aspect, moves from outside in. So it's affected by the outside things, while the noetic is inside out. So our most spiritual self from inside out. The true choice is to shift from personal, so the lower aspect, to the divine will, avoiding the sin of separateness. So this lower personality, Blavatsky says that when we let ourselves be led by it, we are falling in the sin of separateness, and we think that we all are different. Whereas when we act from the individuality, from the superior triad, we are acting from self-awareness and choice, which is a characteristic that only human beings have as compared with animals, for instance. And when we act from this upper aspect of ourselves, she says that we are putting in action the signature of the soul.
the real being, the real us. And when we do that, when we transcend this sin of separateness and put in action the signature of the soul, is when we are making evolution possible. Because self-consciousness arises from manas, which, when freed from the aspect of kama, these animal souls, the seat of instincts of the desires, become the guide of the highest mental faculties. And it is the organ of free will in physical humans. The great poet Milton expressed it in this way, very beautifully, in his Lost Paradise. I'm not sure what is the translation in English. He says, I mean, the voice of God says, I made man just and right, sufficient to have stood, true free to fall. That's that freedom, that choice that human kingdom has. Such I created all the ethereal powers, and spirits, both them who stood and them who failed. Truly they stood who stood and fell who fell. So to understand human nature, we must recognize this duality that we have. Without it, we can't explain how the same species can produce both a saint, a master, a very high and elevated human being, and a serial killer or people that do so much harm in the world. And there is a beautiful example in the Mundaka Upanishad that is expressed in this beautiful way. Like two golden birds perched on the same tree, the ego and the self with capital dwell in the same body. One eats the sweet and bitter fruits of life, the lower. The other watches in serene detachment, the higher. The more we identify with the ego, the more we suffer. But the moment we remember that we are the self with capital, radiant, still, compassionate, we begin to transcend duality and sorrow. Yet, even when we have this knowledge, we struggle, of course, and often we ask ourselves, how do I know which inner voice to follow? Because some voices feel like conscious, but others are actually tied to skandhas, which are the 5 aggregates: form, sensation, perception, mental formations, and consciousness that sometimes together create the ever-changing and not fixed sense of the lower self. So sometimes these inner voices really are not the voice of our higher self, but all the voices that come from these, from our sensations, perceptions, etc. So sometimes it's, I mean, not sometimes, most of the times it is really a challenge. And therefore, there is something that is very useful and important to practice and to have, that is viveka, discernment. Is essential in this path because it allows us to distinguish the quiet voice of the noetic, the higher self, from the shifting impulses of the lower mind. And this guides us toward truth and right action. So, as human beings, oh my God, I guess I'm just going to make a pause. Is the video getting worse? Yes. Shall I try to change it or shall I keep it like that? What? The video, Katrina's video. is getting foggy. Yeah, it's in a corner, so it's very small. So I can continue like this. Yeah. Okay, I'm sorry, but I don't know what is You happening can, with my laptop you today. can otherwise log in again when the other speaker speaks.
Okay, good. Okay, so let's continue. So, as we have said, we as human beings, we stand between the divine and the animal, the higher and the lower. Through we are often pulled down by our lower nature. This struggle is what allows us to evolve, what Elena Blavatsky calls the Holy Grail. We carry both light and darkness. And for those of you who know this story of Henry James called Mr. Jekyll and Hyde, this represents in a very, I mean, it's a very interesting book to read. Represents this duality that is inherent to the human nature and of our inner conflicts that are root in deep past tendencies. And they are not random part of our growth. They are there because they are rooted in our previous lives and our previous actions in this life. So all this is part of our growth. It's there for a reason, to allow us to grow and explore and go towards the higher realms. And this higher mind is, as we already saw, is linked to the universal consciousness, alaya. That's what Blavatsky presents in her article, Noetic Ethics, while the lower mind reflects the deceptive astral light. As we said, discernment is the key. True consciousness is quiet and unselfish. And the teachings of that are there in all the traditions. We just need to remember them, to study them, to approach them, and more importantly, to live them. So the study of the ancient traditions, the ancient wisdom, aims to allow us or motivate us to practice them on our daily life. As Light on the Path teaches, the only power the disciple should covet is to appear as nothing in the eyes of men. And this is especially challenging in a world like the one we live now, where appearance and validation are often confused with the real world. Yet, this is the Noetic way, not acting for praise or for reward, but from inner alignment and silent integrity. As it is said, to will, to act, and to remain silent. To will, to act, and to remain silent. So how do we as students of theosophy cultivate noetic ethics? First, self-knowledge through reflection, study, and inner observation. And then when we begin to do this, we begin to ask, what is the right action, the noetic action? What is the virtue? What is the good? Even if we only study, that is not enough. Ethics must be lived, as seen in texts like the Bhagavad Gita, Light on the Path, Voice of the Silence, Dhammapada, Secret Doctrine, etc. I could name a big list. Ethics and wisdom are always inseparable. So the aspect that we study has to be always practiced for the improvement and betterment of our reality. So we will stop here and then we will continue with the second part. So I guess we'll go now for the translation part. Okay. Please stop your video. Yeah. Yeah. Now you can just reconnect. मुरारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे गुजारिश है कि बहुत दिनों बाद वापस आई हैं, बुद्ध की शरण में बैठी हैं, तो बस हम सबको भी मंत्रमुग्ध कर दीजिए। मराठी में कई जगह मृणाल जी ने अपनी भाषण दिया है और त्रिवेणी पर तो रेगुलर आती ही रहती हैं और 2 लाइन का अपना परिचय लिखती हैं कि बस वो थियोसॉफी से जुड़ी रहना और थियोसॉफी के बारे में कहते रहना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आप मराठी में आज का विषय है। थैंक यू तरल जी, अर्चना जी, कैटलिना जी। बौद्धिक नीतिशास्त्र, सचेत कृतीचे आंतरिक होकायंत्र. चला, नोएटिक एथिक्स
म्हणजे जाणीवपूर्वक कृतीचा अंतर्गत दिशादर्शक या संकल्पनेचा विचार करूया. ही एक शाश्वत कल्पना आहे जी आजच्या काळात विशेषतः महत्त्वाची वाटते. वेगवान प्रगती आणि जागतिक संधानाने भरलेल्या या जगात चांगले कसे जगावे आणि इतरांशी कसे वागावे हे प्रश्न अधिकच महत्त्वाचे झाले आहेत. नैतिकता बहुतेकदा धर्म, कायदा किंवा समाजाने दिलेल्या नियमांप्रमाणे पाहिली जाते, पण नोएटिक दृष्टिकोनातून ती अधिक वैयक्तिक आणि प्रेरणादायी बनते. एक अंतर्गत मार्गदर्शक म्हणून ज्याचा शोध घेणे योग्य आहे. नोएटिक हा शब्द ग्रीक नोएसिस पासून आलेला आहे सॉरी, ज्याचा अर्थ अंतर्गत ज्ञान किंवा अंतर्दृष्टी असा होतो. नोएटिक एथिक्स आपल्याला आत वळवते, बाह्य नियमांऐवजी अंतर्ज्ञान आणि सत्याच्या आधारावर निवडी करण्यासाठी मार्गदर्शन करते. हे शक्तिदायक आहे, पण त्याचबरोबर एक जबाबदारीही आहे. नैतिकता म्हणजे योग्य आणि अयोग्य यांचा अभ्यास, जो आपले वर्तन न्याय्य आणि जबाबदार बनवतो. पण खरे नैतिक जीवन केवळ नियमांपेक्षा अधिक काही मागते. त्यासाठी अंतर्दृष्टी, हेतू आणि स्वतःबद्दल तसेच जगातील आपल्या स्थानाबद्दल सखोल समज आवश्यक आहे. नोएटिक ॲक्शन या त्यांच्या लेखात HPB लिहितात, ऑकल्टिझम रिगार्ड्स एव्हरी ॲटम ॲज ॲन इंडिपेंडंट युनिट. या विचारातून असे सुचवायचे आहे की चेतना प्रत्येक गोष्टीत अस्तित्वात आहे. आपल्या आत एक अमर तत्व आहे, दैवी मन नाऊस, आणि उच्च मन मनस या खोल स्त्रोताचे प्रतिबिंब आहे. ब्लावट्स्की मॅडम उच्च नोएटिक मन जे सत्य आणि आध्यात्मिक जाणीवेशी सुसंगत आहे आणि खालचे सायकिक मन जे व्यक्तिमत्व आणि भावना यांच्याशी संबंधित आहे यामध्ये फरक करतात. थिओसॉफिकल ग्लॉसरीमध्ये नाऊसला मानवातील दैवी चेतना असे म्हटले आहे. ॲनाक्सॅगोरस यांनी त्याला सर्व हालचालीमागील बुद्धिमत्ता असे वर्णन केले आहे आणि भारतात त्याला जीवात्मा, एकच, वन लाईफ, एकच जीवन असे म्हटले जाते. द की टू थिओसॉफी मधील सप्तपदी रचना सेप्टेनरी कॉन्स्टिट्यूशन असे दर्शवते की उच्च मन स्थिर असते, तर खालचे मन संस्कार, भूतकाळातील कृती संस्कार म्हणजे, आणि स्कंद म्हणजे प्रवृत्ती तात्पुरते व्यक्तिमत्व तयार करते. आपण या खालच्या स्वतःशी ओळख करतो, तरीही आपण नोएटिक दिशेने वर जाऊ शकतो किंवा सायकिक दिशेने खाली जाऊ शकतो. ही निवड आध्यात्मिक जीवनाचा केंद्रबिंदू आहे. उच्च आत्मा खालच्या माध्यमातून कार्य करतो, पण त्याचा आवाज सूक्ष्म असतो आणि अनेकदा इच्छा त्याला दडपून टाकतात. सायकिक बाहेरून आत कार्य करते, नोएटिक आतून बाहेर. खरी निवड वैयक्तिक इच्छेपासून दैवी इच्छेकडे वळते, वेगळेपणाच्या पापापासून दूर राहून एकतेशी जुळवून घेते. जसे हेलेना ब्लावट्स्की नमूद करतात, मनुष्य हा असा प्राणी आहे जो आत्मजाणीव आणि निवड व्यक्त करतो. ही आत्म्याची खूण आहे, यामुळे उत्क्रांती शक्य होते. आत्मजाणीव मनसपासून निर्माण होते जेव्हा ते कामापासून मुक्त होते, तेव्हा ते उच्च मानसिक क्षमतांचे मार्गदर्शक बनते आणि भौतिक मानवांमधील स्वतंत्र इच्छेचे साधन होते. महान कवी जॉन मिल्टन हे असे म्हणतात, जसे परमेश्वराचे शब्द आहेत की मी मानवाला न्याय्य आणि योग्य सरळ घडवले, असे की तो स्थिर राहण्यासाठी समर्थ होता, तरीही त्याला अधःपतनाचे स्वातंत्र्य होते. अशा प्रकारे मी सर्व सूक्ष्म दैवी शक्ती आणि आत्म्यांची निर्मिती केली, जे टिकून राहिले आणि जे अपयशी ठरले ते दोन्ही. खरेच जे टिकले ते टिकले आणि जे पडले ते पडले. मानवी स्वभाव समजून घेण्यासाठी आपण या द्वैताला ओळखले पाहिजे. त्याशिवाय
एकाच मानव जातीमधून संत आणि खुनी दोघे कसे निर्माण होतात हे आपण समजावून घेऊ शकत नाही. मुंडकोपनिषद मधून एक सुंदर उदाहरण आहे. एका झाडावर बसलेल्या दोन सुवर्ण पक्ष्यांसारखे अहंकार आणि आत्मा एकाच शरीरात राहतात. एक जीवनातील गोड आणि कडू फळे चाखतो, तर दुसरा शांत अलिप्ततेने पाहत राहतो. ही काव्यमय प्रतिमा आपल्या आतल्या द्वैताचे चित्रण करते. नाऊस आणि साईक, मनस आणि इच्छा मन. आपण जितके अहंकाराशी ओळख निर्माण करतो, तितके आपण अधिक दुःख भोगतो. पण ज्या क्षणी आपल्या लक्षात येते की आपणच तो आत्मा आहोत, तेजस्वी, शांत, करुणामय, तेव्हा आपण द्वैत आणि दुःख या पलीकडे जाऊ लागतो. तरीही हे ज्ञान असूनही आपण संघर्ष करतो. अनेकदा आपण स्वतःला विचारतो, मी कोणत्या अंतर्गत आवाजाचे अनुसरण करावे? काही आवाज अंतःकरणासारखे वाटतात, पण प्रत्यक्षात ते स्कंधांशी म्हणजे 5 घटक रूप, संवेदना, जाण, मानसिक रचना आणि चेतना जे मिळून खालच्या सतत बदलणाऱ्या आणि स्थिर नसलेल्या स्वची निर्मिती करतात, संबंधित असतात. त्यामुळे कधी कधी हे ओळखणे खरोखरच कठीण होते. म्हणूनच विवेक भेद करण्याची क्षमता या मार्गावर अत्यंत आवश्यक आहे. तो आपल्याला नोएटिक उच्च आत्म्याच्या शांत आवाज आणि कनिष्ठ मनाच्या बदलत्या प्रवृत्ती यांच्यात फरक ओळखायला मदत करतो आणि आपल्याला सत्य व योग्य कृतीकडे मार्गदर्शन करतो. मानव म्हणून आपण दैवी आणि प्राण्यात्मक, डिव्हाइन आणि ॲनिमल यांच्या मधोमध उभे आहोत. जरी आपण अनेकदा आपल्या लोअर नेचर, खालच्या स्वभावामुळे खाली खेचलो जात असलो, तरी हाच संघर्ष आपल्याला उत्क्रांत होण्याची संधी देतो, ज्याला हेलेना ब्लावट्स्की होली ग्रेल असे म्हणतात. आपण प्रकाश आणि अंधार दोन्ही बाळगतो, जसे डॉक्टर जेकिल अँड मिस्टर हाईड. रॉबर्ट लुईस स्टीव्हन्सन यांनी 1886 मध्ये एक नॉव्हेल लिहिलं होतं. तर त्यात त्यांनी डॉक्टर जेकिल आणि मिस्टर हाईड ह्या 2 कॅरेक्टर्सचं चित्रण केलेलं आहे. त्यात ह्युमन नेचर कसं ड्युअल असतं, ड्युअलिटी ऑफ ह्युमन नेचर ह्यात त्यांनी दाखवलेलं आहे. तर आपले अंतर्गत संघर्ष जे खोल भूतकाळातील प्रवृत्तींमध्ये रुजलेले आहेत, हे योगायोगाने नसून आपल्या वाढीचा भाग आहेत. ब्लावट्स्की उच्च मनाला अलय, सार्वत्रिक चेतनाशी जोडतात, तर कनिष्ठ मन भ्रामक, ॲस्ट्रल लाईट प्रतिबिंब दाखवते. विवेक अत्यंत महत्वाचा आहे. खरे अंतःकरण शांत आणि निस्वार्थ असते. ही शिकवण सर्व परंपरांमध्ये आहे. आपल्याला फक्त ती लक्षात ठेवायची आहे आणि अधिक महत्वाचे म्हणजे ती आचरणात आणायची आहे. लाईट ऑन द पाथ मध्ये सांगितले आहे, शिष्याने ज्या एकमेव शक्तीची इच्छा करावी ती म्हणजे लोकांच्या नजरेत काहीच नसल्यासारखे दिसणे. हे विशेषतः त्या जगात कठीण आहे जिथे बाह्यरूप आणि मान्यता यांची अनेकदा खऱ्या मूल्याशी गल्लत केली जाते. तरीही हाच नोएटिक मार्ग आहे. कौतुक किंवा बक्षिसासाठी कृती न करता अंतर्गत सुसंगती आणि मौन प्रामाणिकतेतून कृती करणे. जसे म्हटले आहे, इच्छा करणे, कृती करणे आणि शांत राहणे. मग आपण थिओसॉफीचे विद्यार्थी म्हणून नोएटिक नैतिकता, बौद्धिक नैतिकता कशी विकसित करू? प्रथम आत्मज्ञान, चिंतन, अभ्यास आणि अंतर्मुख निरीक्षणाद्वारे आपण विचार करू लागतो, योग्य कृती काय आहे, सद्गुण काय आहे, चांगले काय आहे. फक्त अभ्यास पुरेसा नाही, नैतिकता जगावी लागते. भगवद्गीता, लाईट ऑन द पाथ, द व्हॉइस ऑफ सायलेन्स, धम्मपद आणि द सिक्रेट डॉक्ट्रिन यांसारख्या ग्रंथामध्ये दिसते तसे नैतिकता आणि ज्ञान हे नेहमी अविभाज्य असतात. धन्यवाद. इथे पार्ट 1 संपलेला आहे. थैंक यू सो मच मृणाल जी. और थँक्यू. अभी हम
2 मिनट में शुरू करते हैं। थोड़ा सा आज मेरा डेस्कटॉप स्लो चल रहा है। जी अर्चना जी, आपका स्वागत है। और मृणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो काफ़ी समय 2017 से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आप मराठी में बोलते हैं, बड़े फ्लो में समझ में आता है। थैंक यू। अर्चना मुंशी जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। वे मुंबई में ही जन्मी हैं और माइक्रोबायोलॉजी का उन्होंने कोर्स किया है। साथ ही उन्होंने काफ़ी थिएटर एक्टिविटीज़ की हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। और प्राणिक हीलिंग से भी वे जुड़ी हुई हैं। एक मिनट, मेरा ये हैंग हो गया। नेचुरोपैथी की जो वैकल्पिक चिकित्सा होती है, उसका उन्होंने व्यावसायिक रूप से अध्ययन किया है। और उसमें काफ़ी आगे बढ़ी है। और विनोबा भावे जी द्वारा स्थापित गोत्री प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम बड़ौदा में प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन भी किया है। साथ ही जैसा मैंने कहा कि वे ज्योति लॉ से जुड़ी हुई हैं, साथ ही त्रिवेणी से भी शुरू से जुड़ी हुई हैं। और इसकी एक स्तंभ है। आइए अर्चना जी, आपका स्वागत है। हिंदी में आज का विषय आप बताइए। थैंक धन्यवाद तरल जी। धन्यवाद कैटलीना और मृणाल। तो आज का मेरा विषय है हिंदी में बौद्धिक नैतिकता सचेत क्रिया का आंतरिक दिशा सूचक। तो आइए जानते हैं बौद्धिक नैतिकता सचेत कर्म का आंतरिक दिशा सूचक का अन्वेषण करते हैं, जो एक शाश्वत विचार है और आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक प्रतीत होता है। तीव्र प्रगति और वैश्विक जुड़ाव से भरी इस दुनिया में बेहतर जीवन जीने और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के संबंधित प्रश्न पहले से ही अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। नैतिकता को अक्सर धर्म, कानून या समाज के नियमों के रूप में देखा जाता है, लेकिन बौद्धिक दृष्टिकोण से यह कुछ अधिक व्यक्तिगत और प्रेरणादायक बन जाता है। एक आंतरिक मार्गदर्शक जिसका अन्वेषण करना सार्थक है। नोएटिक शब्द ग्रीक शब्द नोएसिस से आया है, जिसका अर्थ है आंतरिक ज्ञान या अंतःदृष्टि। नोएटिक नैतिकता हमें अंतर्मुखी बनाती है, बाहरी नियमों के बजाय अंतर्ज्ञान और सत्य के आधार पर निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। यह सशक्त बनाती है, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी है। नैतिकता सही और गलत का अध्ययन है, जो हमें निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का तरीका सिखाती है। लेकिन सच्चे नैतिक जीवन के लिए नियमों से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक अंतर्दृष्टि, इरादा और स्वयं की तथा दुनिया में अपने स्थान की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। अपने लेख नोएटिक एक्शन में एचपीबी जी लिखती हैं, रहस्यवाद प्रत्येक परमाणु को एक स्वतंत्र इकाई मानता है। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है कि occultism regards every atom as an independent unit। यह विचार बताता है कि चेतना हर चीज में विद्यमान है। हमारे भीतर एक अमर सार दिव्य पुरुष या नाउस विद्यमान है और उच्चतर मानस इस गहरे स्रोत का इसको प्रतिबिंबित करता है। ब्लेवत्स्की उच्चतर बौद्धिक मन यानी सत्य और आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ा हुआ करती है, और निम्नतर मानसिक मन व्यक्तित्व और भावनाओं से जुड़ा हुआ। इन दोनों के बीच में वे अंतर करती हैं। थियोसॉफिकल ग्लॉसरी में नाउस को मनुष्यों में दिव्य चेतना के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे एनाक्सागोरस ने सभी गति के पीछे की बुद्धि के रूप में और भारत में जीवात्मा एक जीवन के रूप में वर्णित किया गया है। द की टू थियोसॉफी में सप्तक संरचना दर्शाती है कि उच्च मन स्थिर है, जबकि निम्न मन
संस्कार भूतकाल और स्कंद यानी प्रवृत्तियों क्षण भंगुर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हम इस निम्न स्व से स्वयं को जोड़ते हैं, फिर भी हम बौद्धिक स्तर की ओर उठ तो सकते हैं या मानसिक स्तर में डूबे रह सकते हैं। यह चुनाव आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बिंदु है। उच्चतर आत्मा निम्नतर आत्मा के माध्यम से कार्य करती है, लेकिन उसकी वाणी सूक्ष्म होती है और अक्सर इच्छाओं में दब जाती है। मानसिक शक्ति बाहर से अंदर की ओर और बौद्धिक शक्ति अंदर से बाहर की ओर गति करती है। सच्चा चुनाव व्यक्तिगत इच्छा से हटकर दैवीय इच्छा की ओर जाता है। अलगाव के पाप से बचते हुए एकता के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। जैसे कि हेलेना ब्लेवात्स्की कहती हैं, मनुष्य अद्वितीय रूप से आत्म जागरूकता और चुनाव को व्यक्त करते हैं। यह आत्मा की पहचान है। यही विकास को संभव बनाता है। आत्म चेतना मनस से उत्पन्न होती है, जो काम से मुक्त होने पर उच्चतम मानसिक क्षमताओं का मार्गदर्शक बन जाती है। और भौतिक मनुष्यों में स्वतंत्र इच्छा एक अंग होता है। महान कवि मिल्टन इस प्रकार इसे व्यक्त करते हैं कि मैंने मनुष्य को न्यायप्रिय और सही बनाया, उसे इतना सक्षम बनाया कि वह खड़ा रह सके, यद्यपि गिरने के लिए वह स्वतंत्र था। मैंने सभी दिव्य शक्तियों और आत्माओं की रचना इस प्रकार की, और आत्माओं को भी, चाहे वे स्थिर रहे या ना रहे, सचमुच जो स्थिर रहे वे स्थिर रहे और जो गिरे वे गिरे। तो मानव स्वभाव को समझने के लिए हमें इस द्वैत को पहचानना होगा। इसके बिना हम यह नहीं समझा सकते कि एक प्रजाति, एक संत और एक सीरियल किलर दोनों को कैसे जन्म दे सकती है। मुंडक उपनिषद में एक सुंदर उदाहरण है। जैसे दो सुनहरे पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हो, वैसे ही अहंकार और आत्मा एक ही शरीर में निवास करते हैं। एक जीवन के मीठे और कड़वे फल खाता है और तो दूसरा शांत अनासक्ति से देखता रहता है। यह काव्यात्मक उपमा हमारे भीतर के द्वैत स्वभाव यानी मन और आत्मा, मनस और इच्छा मन को दर्शाती है। जितना अधिक हम अहंकार से जुड़ते हैं, उतना ही अधिक दुख भोगते हैं। परंतु जिस क्षण हमें याद आता है कि हम आत्मा हैं, दीप्तमान, स्थिर, करुणामय, हम द्वैत और दुख से ऊपर उठने लगते हैं। फिर भी इस ज्ञान के बावजूद हम संघर्ष करते हैं। अक्सर हम खुद से पूछते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करना चाहिए। कुछ आवाजें अंतरात्मा जैसी लगती हैं, लेकिन वास्तव में स्कंधों, जो 5 तत्व हैं, रूप, संवेदना, बोध, मानसिक संरचना और चेतना, ये पांचों मिलकर निम्न स्वर स्व की निरंतर परिवर्तनशील और अस्थिर भावना का निर्माण करते हैं और उसी से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए कभी कभी ये जानना वास्तव में एक चुनौती होती है, और इसीलिए इस मार्ग में विवेक यानी समझदारी अत्यावश्यक है। यह हमें बौद्धिक उच्च स्तर स्व की शांत आवाज को निम्नतर मन की परिवर्तनशील आवाजों से अलग करने में सक्षम बनाता है और हमें सत्य और सही कर्म की ओर मार्गदर्शन करता है। मनुष्य होने के नाते हम दिव्य और पशुवत प्रवृत्ति के बीच खड़े हैं। यद्यपि अक्सर हमारी निम्न प्रवृत्ति हमें नीचे खींचती है, यही संघर्ष हमें विकसित होने का अवसर देता है, जिसे हेलेना ब्लेवात्स्की जी पवित्र ग्रेव कहती है। लेकिन डॉक्टर जेकिल एंड हाइड की जो कहानी है, उसकी तरह जेकिल एंड हाइड की तरह प्रकाश और अंधकार हम दोनों धारण करते हैं। हमारे आंतरिक संघर्ष जो अतीत की गहरी प्रवृत्तियों में निहित है, अनावश्यक नहीं, बल्कि वे हमारे विकास का हिस्सा है। ब्लेवात्स्की जी उच्च मन को अल्या सार्वभौमिक चेतना से जोड़ती है, जबकि निम्न मन भ्रामक
सूक्ष्म प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। विवेक ही पूंजी है। सच्चा विवेक शांत और निस्वार्थ होता है। ये शिक्षाएं सभी परंपराओं में मौजूद हैं, हमें बस इन्हें याद रखना है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इन्हें अपने जीवन में उतारना है। जैसा कि लाइट ऑन द पाथ सिखाता है, शिष्य को केवल एक ही शक्ति की लालसा करनी चाहिए, और वह है मनुष्यों की दृष्टि में तुच्छ दिखना। ये विशेष रूप से उस दुनिया में चुनौतीपूर्ण है जहां दिखावे और प्रशंसा को अक्सर वास्तविक मूल्य के साथ भ्रमित कर दिया जाता है। फिर भी यही नोएटिक बौद्धिक मार्ग है। प्रशंसा या पुरस्कार के लिए ये नहीं है, बल्कि आंतरिक सामंजस्य और मौन निष्ठा से कार्य करना है। जैसा कि कहा गया है, इच्छा करना, कार्य करना और मौन रहना। तो हम थियोसॉफी के विद्यार्थी बौद्धिक नैतिकता का विकास कैसे करें? सर्वप्रथम आत्मज्ञान, चिंतन, अध्ययन और अंतर्मन के अवलोकन के माध्यम से हम ये प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। सही कर्म क्या है? सद्गुण क्या है? अच्छाई क्या है? केवल अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। नैतिकता को जीवन में उतारना आवश्यक है। भगवत गीता, लाइट ऑन द पाथ, मौन की वाणी, वॉइस ऑफ साइलेंस, धम्मपद और गुप्त सिद्धांत जैसे ग्रंथों में देखा गया है कि नैतिकता और ज्ञान हमेशा अविभाज्य है। तो धन्यवाद। यहाँ पहला भाग समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। और कैटलीना जी, आपका इस वक्त तस्वीर एकदम साफ हो गई है। नाउ यू आर क्लियरली विजिबल। प्लीज गो अहेड विद पार्ट 2। Ji, can you please share the screen from the 7th slide, please? I am not able to do it from this. Okay, just a minute. Okay. It's not downloaded yet. You are not able to show? No, let me try. I'm Because having today all the kind of problems. Even my internet is not working very good, so let me see. Okay, let me check if I can. why it doesn't work? Let me see if I can share. Okay, let's see if it works. Yeah, it is working. It's working. Okay. Okay, so let's continue. I hope I can stay connected because my internet is very, very bad. We had like an energy problem here, and let's see. Okay, let's trust that everything will go well until the end. So, as we were discussing, different traditions show us that, and there is in the chapter 13 of the Bhagavad Gita that is called the distinction between the feel and the knower. I will dare to say it in Sanskrit: Kshetra, Kshetraya, Vibhaga Yoga. It offers an incredible lens into this whole idea of noetic ethics. It clarifies the gap between what we are and we think we are. The field, Kshetra, represents the body, the mind, the intellect, the ego, everything that is changing, Prakriti. The knower of the field, Kshetraya, is the self, the Atman, the pure and changing consciousness, the higher self. So Krishna adds a key insight, and he says that he, as the divine, is the knower in all fields, the same self in everyone, and this transforms ethics if the same self is in all of us. Now, if we just sit with that for a moment, it completely flips the script on how we see the world and how we treat each other. Because if I recognize the same self in you that is in me, how can I harm you?
Or how can I harm you without harming me? Or deceive you without deceiving me? Or act out of selfishness? That's the ethical power behind this teaching. It doesn't come from a rule book, it comes from a deep lived realization. Krishna points to qualities like humility, nonviolence, forgiveness, and self-reflection, not as rules, but as signs of living from the knower of the field. And this is exactly what noetic ethics is about. It's about ethical living, to not letting us be shaped by outer circumstances, but to moving from the heart, from clarity, from vision, from knowing. And there is a verse in the Bhagavad Gita that captures it beautifully. It says, "He who sees the Supreme Lord abiding equally in all beings, the imperishable amidst the perishable, he truly sees." This makes me think that we are truly meant to become seers. That's it, right here, right now. That's the lens we need. Can you hear me, sir? हेलो सर हेलो। सर कतरीना जी का कनेक्शन चला गया लगता है। हाँ, ये क्या हुआ? उनका वो स्टॉप शेयरिंग भी हो गया और उनका लॉग आउट भी हो गया शायद। अच्छा, तो उन्होंने क्या हम बोला था ना दूसरा कोई पार्ट शुरू कनेक्शन। करें? हाँ हाँ रुक जा। हाँ मृणाल जी कर लें फिर। ठीक है। उन्होंने बोला था ना पावर का प्रॉब्लम है। हम्म। मृणाल जी, कैन यू गो हाँ अहेड विद मराठी? या ठीक है। वो आएंगी तो फिर उनको कंटिन्यू कराओ। अच्छा ठीक आहे, थँक्यू. अभी हम आता आपण दुसरा भाग बघणार आहोत. भगवद्गीतेच्या अध्याय 13 जो आहे क्षेत्रज्ञ विभाग योग, फील्ड आणि नोअर यातील भेद, हा नोएटिक एथिक्सच्या संपूर्ण संकल्पनेला समजून घेण्यासाठी एक अद्भुत दृष्टिकोन देतो. तो आपण काय आहोत आणि आपण स्वतःला काय समजतो यातील अंतर स्पष्ट करतो. क्षेत्र, शरीर, मन, बुद्धी, अहंकार सर्व बदलणाऱ्या गोष्टी म्हणजे प्रकृती, आणि क्षेत्रज्ञ आत्मा, शुद्ध अपरिवर्तनीय चेतना म्हणजे उच्च आत्मा. श्रीकृष्ण एक महत्वाचा मुद्दा मांडतात. ते दैवी रूपात सर्व क्षेत्रांमधील क्षेत्रज्ञ आहेत, म्हणजेच सर्वांमध्ये तोच एक आत्मा आहे. यामुळे नैतिकतेचा दृष्टिकोन बदलतो. जर सर्वांमध्ये तोच आत्मा आहे. आता आपण क्षणभर विचार केला तर आपण जगाकडे कसे पाहतो आणि एकमेकांशी कसे वागतो हे चित्र पूर्णपणे बदलते. कारण जर मी तुमच्यात तोच आत्मा ओळखतो जो माझ्यात आहे, तर मी तुम्हाला कसे इजा करू शकतो किंवा फसवू शकतो किंवा स्वार्थीपणे वागू शकतो. हेच या शिकवणी मागील नैतिक सामर्थ्य आहे, जे नियम पुस्तकातून येत नाही तर खोल जगलेल्या अनुभवातून येते. श्रीकृष्ण नम्रता, अहिंसा, क्षमा आणि आत्मचिंतन यांसारख्या गुणांकडे निर्देश करतात. नियम म्हणून नाही, तर क्षेत्रज्ञ म्हणून जगण्याची चिन्हे म्हणून, जाणत्याकडून आलेले जगण्याचे विज्ञान.
प्रकृती कृती घडवते, तर पुरुष म्हणजे साक्षीभाव असलेली चेतना अपरिवर्तित राहते. त्या अवस्थेतून कृती करणे म्हणजे जाणीवपूर्वक नैतिक जीवन जगणे, जे नोएटिक एथिक्सचे सार आहे. बाह्य परिस्थिती किंवा अंतर्गत सवयींनी ढकलले न जाणे, तर खऱ्या समजुतीतून वागणे. हृदयातून, होय, स्पष्टतेतून, दृष्टिकोनातून, जाणीवेतून. हा एक भगवद्गीता अध्याय 13 मधील 28वा श्लोक आहे, जो हे सुंदररित्या व्यक्त करतो. त्याचा अर्थ आहे, जो सर्व प्राण्यांमध्ये समान रूपाने बसलेल्या परमेश्वराला पाहतो, नाशिवंतांमध्येही तो अविनाशी आहे, तोच खऱ्या अर्थाने पाहतो. आपण द्रष्टे होण्यासाठी आहोत. हेच आहे, अगदी इथेच. हीच ती दृष्टी आहे जी आपल्याला हवी आहे. नियम नाहीत, परिणामांची भीती नाही, तर दृष्टी, खरे पाहणे. म्हणून असा प्रश्न होतो, आपण त्या अवस्थेतून जगू शकतो का? अहंकाराऐवजी क्षेत्रज्ञ म्हणून वागू शकतो का? आणि उत्तर आहे हो. पण सर्व खोल साधनांप्रमाणे याची सुरुवात जागरूकतेपासून होते आणि ते स्मरणाने टिकून राहते. हेच नोएटिक एथिक्सचे सार आहे. ते कोणत्याही एका धर्माशी बांधलेले नाही, तर करुणा, संयम, दयाळूपणा आणि क्षमा यांसारख्या सार्वत्रिक मूल्यांवर आधारित आहे. ही अर्थपूर्ण जीवनासाठी आवश्यक आहेत आणि आपल्याला आठवण करून देतात की इतरांची काळजी घेणे म्हणजे स्वतःचीही काळजी घेणे. काही थिओसॉफिस्ट नैतिकतेला जीवनातील महत्त्वाच्या क्रमबद्ध तत्वांचा आधार देतात. एकता आणि एकत्व. 2. चेतना आणि पदार्थ यातील संबंध. 3. नियमबद्ध सुव्यवस्थित विश्व. 4. समतोल आणि 7 स्तरांचा सिद्धांत. 5. चक्र सर्व काही नमुन्यांमध्ये चालते, पॅटर्न्स प्रमाणे. 6. जीवनामागील उद्देश. 7. आध्यात्मिक वाढ किंवा उत्क्रांतीची क्षमता. यातून एक नैतिक प्रणाली उदयास येते, जी अंतर्गत परिवर्तनावर केंद्रित आहे. याच्या मध्यभागी एक साधी पण गहन कल्पना आहे. आपण जे काही पाहतो, माणसांची विविधता, निसर्ग, विश्व यांच्या मागे एकच अंतिम सत्य आहे. ही फक्त तात्विक संकल्पना नाही, तर संपूर्ण अस्तित्वाच्या पाठीमागे असलेले एक गूढ सत्य आहे. हेलेना ब्लावट्स्की यांनी त्यांच्या 3 फंडामेंटल प्रपोजिशन्स मधील पहिल्या तत्वात हे असे मांडले आहे. 1. सर्वव्यापी, शाश्वत, असीम आणि अपरिवर्तनीय तत्व आहे, ज्यावर कोणताही तर्क करणे अशक्य आहे, कारण ते मानवी कल्पनाशक्तीच्या पलीकडे आहे आणि कोणतीही मानवी अभिव्यक्ती किंवा तुलना त्याला केवळ कमीच दाखवू शकते. सिक्रेट डॉक्ट्रिन. त्यांनी त्याला बीनेस असे म्हटले, बीइंग सुद्धा नाही, कारण ते आपल्या नेहमीच्या अस्तित्वाच्या कल्पनांपलीकडे जाते. ही एकता सारखेपण नाही, तर एक एकात्मिक संपूर्णता आहे. 2. चेतना आणि पदार्थ हे एका वास्तवाचे 2 पैलू आहेत. विश्वात सुव्यवस्था दिसते, अराजक नाही, जी आतून बाहेर उलगडते. 4. 7 स्तरांमध्ये समतोलाने. 5. निसर्ग चक्रांमध्ये सृष्टी आणि प्रलय. हे क्रमबद्ध चालते. हा प्रकट होण्याचा आणि लय होण्याचा एक लयबद्ध प्रवाह आहे. हे सर्व निर्मिती आणि नूतनीकरणाच्या लयबद्ध नृत्याचा भाग आहे. आणि येथे एक रोचक गोष्ट आहे. आधुनिक जीवशास्त्र अनेकदा उत्क्रांतीला योगायोग आणि स्पर्धेने चालवली जाते असे मानते, परंतु उत्क्रांती योगायोगाने नसून 6 उद्देशपूर्ण आहे. ती एका दैवी योजनेने मार्गदर्शित आहे, अधिक विकसित सत्तांद्वारे आणि देवता किंवा निसर्गशक्तींसारख्या इतर सत्तांद्वारे चालवली जाते. अशा सत्तांची श्रेणी जी आपण पाहू शकत नाही.
पण त्या आतून विश्वाचे मार्गदर्शन करत असतात. 7. या दृष्टिकोनातून उत्क्रांती ही आध्यात्मिक परिपूर्णतेकडे जाणारी प्रक्रिया आहे. जर सर्व जीवनाचा स्रोत एकच असेल तर बंधुत्व माणसांमध्ये, प्राण्यांमध्ये आणि निसर्गात नैतिकतेचा पाया बनतो. ही एकता विसरणे म्हणजे स्वार्थ निर्माण होणे आणि त्याचे कर्मफल भोगणे. चेतना आणि पदार्थ एकमेकांशी जोडले असल्याने आपले विचार इतरांवर परिणाम करतात, उन्नती करतात किंवा हानी पोचवतात. नोएटिक एथिक्स आपल्याला अंतर्गत ज्ञानाने मार्गदर्शन घेण्यास सांगते आणि ती केवळ सैद्धांतिक नसून अत्यंत व्यावहारिक असल्याचे दाखवते. हाच थिओसॉफीच्या रोजच्या जीवनाचा जगण्याचा मार्ग आहे. ध्यानासारख्या साधना आपल्याला केंद्रित करतात आणि स्पष्टता व दयाळूपणा प्रकट करायला मदत करतात. विचारांना शांत सेवेत रूपांतरित करतात. एका सुव्यवस्थित विश्वात प्रत्येक नैतिक कृतीचे खरे परिणाम असतात, दिसणारे किंवा न दिसणारे. जरी ध्यान हे मूलभूत असले, जागरूकता, अंतर्ज्ञान आणि अंतर्गत स्पष्टता विकसित करणारे, तरी ते कृतीत उतरवले गेले पाहिजे. बाह्य नियमांवर अवलंबून राहण्याऐवजी आपण आतून योग्य काय आहे हे जाणवू लागतो, उच्च आत्म्याशी सुसंगत होत. ध्यान नोएटिक मार्ग जागृत करते, ती शांतता जी आपल्या जीवनाच्या संगीताला अर्थ देते आणि आपल्याला केवळ प्रतिक्रिया देण्यापासून दूर नेऊन अधिक खोल प्रश्न विचारायला प्रवृत्त करते. मी खरोखर काय अनुभवत आहे? याचे मूळ काय आहे? योग्य प्रतिसाद काय आहे? तरीही फक्त ध्यान पुरेसे नाही. नोएटिक एथिक्ससाठी अभ्यास, आत्मचिंतन, करुणा, इच्छाशक्ती आणि सेवा आवश्यक आहेत. द व्हॉइस ऑफ सायलेन्स मध्ये म्हटले आहे, जो कृती करण्यास नकार देतो त्याला निसर्ग स्वीकारत नाही. ध्यान आत्म्याला जागृत करते, पण नैतिक कृती त्याला रूप देते. पूर्णपणे समजले गेले नसले तरी कर्म ही एक देणगी आहे. ती समतोल पुनर्स्थापित करते आणि उत्क्रांतीसाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करते, म्हणजे धर्म. शेवटी नोएटिक एथिक्स म्हणजे आपल्या खऱ्या स्वभावाशी सुसंगत होणे, भीतीने नाही तर अंतर्गत ज्ञानाने मार्गदर्शित होणे. जेव्हा आपण उच्च आत्म्याला जागृत होतो तेव्हा नैतिक समज शिकावी लागत नाही, ती उलगडते. बुद्धीद्वारे, त्या आवाजाद्वारे जो हळूच सांगतो आणि प्रतिध्वनित होतो. या शांत अंतःकरणातील खात्रीतून अंतर्ज्ञान, ध्यान आणि आत्मचिंतनाने पोचलेल्या योग्य कृती नैसर्गिकरित्या सत्य आणि वैश्विक इच्छेशी सुसंगत होते. थिओसॉफीमध्ये आत्मा हा सार्वत्रिक आत्मा आहे, जो बुद्धी आणि मनस यांच्याशी एकत्र येऊन मोनॅड तयार करतो. मनुष्यातील खरा विकसित होणारा आत्मस्वरूप. याचा संबंध द थिओसॉफिकल सोसायटीच्या 3ऱ्या उद्दिष्टाशी आहे. निसर्गातील अजून न समजलेले नियम आणि मानवातील सुप्त शक्तींचा शोध घेणे, ज्यामध्ये केवळ मानसिक पैलूंव्यतिरिक्त प्रेम, करुणा, अंतर्ज्ञान आणि निस्वार्थ सेवा यांचाही समावेश असावा. नोएटिक तत्व म्हणजे आत्म्याची मौन बुद्धिमत्ता, शांत बुद्धिमत्ता, जी बुद्धीशी सुसंगत असते. जेव्हा मनस उन्नत होते तेव्हा ज्ञान जागृत होते. अंतर्दृष्टी जी सत्य पाहते. ही जागृती हृदयातून जगली जाते. जसे द व्हॉइस ऑफ द सायलेन्स मध्ये शिकवले आहे, ती हृदयाचा सिद्धांत दर्शवते, जिथे आपण आत्म्याच्या डोळ्यांनी पाहतो. हेलेना ब्लॅवट्स्की, जिद्दू कृष्णमूर्ती आणि रमण महर्षी यांसारखे आध्यात्मिक साधक या अंतर्गत बुद्धिमत्तेची पुष्टी करतात. जरी हा मार्ग उतार चढावांनी आणि काट्यांनी भरलेला असला तरी तो विश्वाच्या हृदयापर्यंत आणि आपल्या अंतःकरणापर्यंत नेतो. नोएटिक एथिक्स जगण्याचा एक प्रेरणादायी मार्ग देते. आपण सर्व एक आहोत आणि नैतिकता ही नियमांपेक्षा आपण कसे बनत आहोत यावर अधिक अवलंबून आहे. ती आपल्याला मन आणि हृदय दोन्ही विकसित करण्याचे आवाहन करते. तुटलेल्या जगात ती आपल्याला आत वळवते. आधी स्वतःमध्ये उपचार करा
आणि मग एकतेतून कृती करा. ती विचार करण्यास प्रवृत्त करते. मी बोलावे की शांत राहावे? मी प्रेमातून प्रतिसाद देते की भीतीतून? आणि करुणेच्या माध्यमातून कृतीला दिशा देते. शेवटी ही एक शांत क्रांती आहे. नियंत्रणापासून चेतनेकडे, भीतीपासून प्रेमाकडे, एक अंतर्मन ऐकण्याचा मार्ग जो अधिक शांत आणि संपूर्ण जीवनाकडे नेतो. धन्यवाद. इथे दुसरा भाग संपलेला आहे. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी. थैंक यू. तय सीमा में बहुत सरल भाषा में आपने किया. अर्चना जी प्लीज गो अहेड विथ योर हिंदी वर्जन. शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन और कॉल भी नहीं लग रहा है, फोन ऑफ आ रहा है. तो हम दूसरे भाग पे आते हैं. भगवत गीता का अध्याय 13वां का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यानी क्षेत्र और ज्ञाता के बीच का भेद, ज्ञान संबंधी नैतिकता के इस संपूर्ण विचार को समझने का एक अद्भुत माध्यम प्रदान करता है. ये स्पष्ट करता है कि हम क्या है और हम खुद को क्या समझते हैं, इसके बीच का अंतर क्या है. तो देखें, क्षेत्र क्षेत्र यानी शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ जो परिवर्तनशील है, प्रकृति जिसे कहते हैं. क्षेत्र का ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ, आत्मा, आत्मन, शुद्ध अपरिवर्तनीय चेतना, जैसे उच्चतर आत्मा. तो कृष्ण एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि से जोड़ते हैं. वे ईश्वर के रूप में सभी क्षेत्रों के ज्ञाता है. प्रत्येक में एक ही आत्मा है. यह नैतिकता को बदल देता है. यदि एक ही आत्मा सब में है, अब यदि हम इस पर एक क्षण के लिए विचार करें तो यह दुनिया देखने और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से उलट देता है. क्योंकि यदि मैं आप में वही आत्मा पहचानती हूँ जो मुझ में है, तो मैं आपको कैसे हानि पहुंचा सकती हूँ, या आपको धोखा दे सकती हूँ, या स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई कार्य कर सकती हूँ. यही शिक्षा के पीछे एक की नैतिक शक्ति है. ये किसी नियम पुस्तिका से नहीं, बल्कि एक गहन अनुभवजन्य अनुभूति से ही आती है. कृष्ण विनम्रता, अहिंसा, क्षमा और आत्मचिंतन जैसे गुणों की ओर इशारा करते हैं. नियमों के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञानी से प्राप्त जीवन के संकेतों के अर्थ में. प्रकृति कर्म को प्रेरित करती है, जबकि पुरुष जो साक्षी चेतना, वो अपरिवर्तित रहती है. इस अवस्था से कर्म करना सचेत नैतिक जीवन है, और यही ज्ञान संबंधी नैतिकता यानी नोएटिक एथिक्स का सार है. बाहरी परिस्थितियों या आंतरिक बंधनों से प्रभावित न होना, बल्कि सच्ची समझ से आगे बढ़ना. हृदय से, हाँ, स्पष्टता से, दृष्टि से, ज्ञान से आगे बढ़ना. एक श्लोक जिसे खूबसूरती से व्यक्त करता है, जो भगवत गीता के 13वें अध्याय में 28वां श्लोक है. उसका अर्थ ऐसा निकलता है, जो परमेश्वर को सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान देखता है, नश्वर के बीच अविनाशी को देखता है, वही सच्चा दर्शन है. तो हमें दृष्टा बनना है. बस यही बात है. यही वह दृष्टि है जिसकी हमें आवश्यकता है. नियम नहीं, परिमाणों का भय भी नहीं, बल्कि दृष्टि, सच्चा दर्शन. तो सवाल ये उठता है कि क्या हम उस अवस्था से जी सकते हैं? क्या हम अहंकार से नहीं, बल्कि ज्ञान से कार्य कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है हाँ. लेकिन सभी गहन अभ्यासों की तरह इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है, और स्मरण से ये निरंतर बनी रहती है. यही नोएटिक एथिक्स यानी बौद्धिक नैतिकता का सार है. यह किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य, दया और क्षमा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों से जुड़ी हुई है. ये एक सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमें याद दिलाते हैं कि दूसरों की देखभाल करना स्वयं की देखभाल करना भी है. कुछ थियोसॉफिस्ट नैतिकता को जीवन के प्रमुख आदेशात्मक सिद्धांतों पर आधारित मानते हैं. पहला, एकता और एकत्व. दूसरा,
चेतना और पदार्थ के बीच संबंध। तीसरा, एक नियमबद्ध सुव्यवस्थित ब्रह्मांड। चौथा, सामंजस्य और एक साथ गुना सिद्धांत, 7 स्तर का सिद्धांत। पांचवा, चक्र, सब कुछ एक निश्चित क्रम में चलता है। छठा, जीवन का उद्देश्य। सातवां, आध्यात्मिक विकास या उन्नति की संभावना। इससे आंतरिक रूपांतरण पर केंद्रित कर एक नैतिक प्रणाली उभरती है। इसके मूल में एक सरल और लेकिन गहरा विचार है। हम जो कुछ भी देखते हैं, लोगों की विविधता, प्रकृति, ब्रह्मांड, उसके पीछे एक ही वास्तविकता है। यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक गहरा सत्य है जो संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। एचपीबी जी ने अपने 3 मूलभूत प्रस्तावों, फंडामेंटल प्रपोजिशन में कहा, पहला, मैं से पहले इसमें इस प्रकार व्यक्त किया, एक सर्वव्यापी, शाश्वत, असीम और अपरिवर्तित सिद्धांत है जिस पर सभी अटकलें असंभव हैं, क्योंकि यह मानवीय कल्पना की शक्ति से परे है और किसी भी मानवीय अभिव्यक्ति या उपमा से बौना ही हो सकता है। सीक्रेट डॉक्ट्राइन में उन्होंने इस अस्तित्व नहीं बल्कि होना कहा है, क्योंकि यह अस्तित्व के हमारे सामान्य विचारों से परे है। यह एकता, समानता नहीं बल्कि एकीकृत संपूर्णता है। दूसरे में कहती हैं, चेतना और पदार्थ एक ही वास्तविकता के 2 पहलू हैं। तीसरा, ब्रह्मांड व्यवस्था दिखाता है, अव्यवस्था नहीं, जो भीतर से बाहर की ओर है। चौथा, 7 तलों में सामंजस्य के साथ प्रकट होता है। पांचवा, प्रकृति चक्र सृष्टि और प्रलय में गतिमान है, जो अभिव्यक्ति और वापसी की एक लयबद्ध प्रक्रिया है। ये सब सृजन और नवीनीकरण के लयबद्ध नृत्य का हिस्सा है। और यहाँ एक रोचक तथ्य यह है कि जबकि आधुनिक जीव विज्ञान अक्सर विकास को यादृच्छिक संयोग और प्रतिस्पर्धा से प्रेरित मानता है, विकास यादृच्छिक नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण है। एक छठा है जो एक दिव्य योजना द्वारा निर्देशित, अधिक विकसित प्राणियों और अन्य प्राणियों जैसे देव या प्रकृति आत्माओं द्वारा संचालित प्राणियों के पद अनुक्रम, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन जो भीतर से ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करते हैं। और सातवां, इसी दृष्टिकोण से विकास आध्यात्मिक पूर्णता की एक गति है। यदि समस्त जीवन का स्रोत एक ही है, तो मनुष्य, पशु और प्रकृति के बीच भाईचारा नैतिकता का आधार बनता है। और इस एकता को भूलने से स्वार्थ और उसके कर्म फल उत्पन्न होते हैं। चूंकि चेतना और पदार्थ आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे विचार दूसरों को प्रभावित करते हैं, चाहे वे उत्थान के हों या हानि के। बौद्धिक नैतिकता हमें अंतर्मन की बुद्धि से निर्देशित होने के लिए प्रेरित करती है, जो स्वयं को अमूर्त नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक सिद्ध करती है। यही वह तरीका है जिससे हम थियोसॉफी को अपने दैनिक जीवन में जीते हैं। ध्यान जैसी साधनाएं हमें एकाग्र होने और स्पष्टता एवं दयालुता का संचार करने में मदद करती है, जिससे विचार एक शांत सेवा भाव में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सुव्यवस्थित ब्रह्मांड में प्रत्येक नैतिक कार्य का वास्तविक प्रभाव होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। ध्यान मूलभूत है, जागरूकता, अंतर्ज्ञान और आंतरिक स्पष्टता का विकास करता है, लेकिन हमें इस कर्म में भी व्यक्त किया जाना चाहिए। बाह्य नियमों पर निर्भर रहने के बजाय हम अपने भीतर से, अपने उच्चतर स्व से जुड़कर सही का अनुभव करने लगते हैं। ध्यान बौद्धिक मार्ग को जागृत करता है, वह मौन जो हमारे जीवन के संगीत को अर्थ देता है, हमें प्रतिक्रिया करने से हटकर गहरे प्रश्नों की ओर ले जाता है। मैं वास्तव में क्या महसूस कर रही हूँ? इसकी जड़ क्या है? सही प्रतिक्रिया क्या है? लेकिन केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं है।
बौद्धिक नैतिकता के लिए अध्ययन, आत्मचिंतन, करुणा, इच्छा शक्ति और सेवा आवश्यक है। जैसा कि वॉइस ऑफ साइलेंस ने कहा है, प्रकृति किसी भी ऐसे व्यक्ति से घृणा करेगी जो कर्म से करने से इनकार करता है। ध्यान आत्मा को जागृत करता है, लेकिन नैतिक कर्म उसे आकार देता है। यद्यपि कर्म को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, फिर भी ये उपहार है जो सामंजस्य स्थापित करता है और विकास धर्म के लिए परिस्थितियां प्रदान करता है। अंततः बौद्धिक नैतिकता हमारे सच्चे स्वरूप के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। आंतरिक ज्ञान द्वारा निर्देशित होना, भय द्वारा नहीं। जैसे जैसे हम अपने उच्चतर स्व के प्रति जागरूक होते हैं, नैतिक समझ बुद्धि के माध्यम से प्रकट होती है, न कि सीखी जाती है। ये वह वाणी है जो फुसफुसाती है और गूंजती है। अंतर्ज्ञान, ध्यान और आत्म जांच द्वारा पोषित हृदय की इस शांत निश्चितता से ही सही कर्म स्वाभाविक रूप से सत्य और सार्वभौमिक इच्छा के साथ जुड़ जाता है। थियोसॉफी में आत्मा सार्वभौमिक भावना है जो बुद्धि और मनस के साथ मिलकर एकात्म मोडाट का निर्माण करती है। मनुष्य में निहित सच्चा विकसित होता हुआ स्व, यह थियोसॉफिकल सोसाइटी के तीसरे उद्देश्य से संबंधित है। प्रकृति के अनसुलझे नियमों और मनुष्य में छिपी शक्तियों का अन्वेषण करना, जिसमें मानसिक पहलुओं से परे प्रेम, करुणा, अंतर्ज्ञान और निस्वार्थ सेवा शामिल होनी चाहिए। बौद्धिक सिद्धांत आत्मा की शांत बुद्धि है जो बुद्धि के साथ प्रतिध्वनित होती है। जब मनस का उत्थान होता है तो ज्ञान जागृत होता है, आंतरिक दृष्टि जो सत्य का बोध कराती है। यह जागृति हृदय के माध्यम से अनुभव की जाती है। जैसा कि मौन की वाणी यानी वॉइस ऑफ साइलेंस में सिखाया गया है, यह हृदय के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती है, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्ट, जहां हम आत्मा की आंखों से देखते हैं। हेलेना ब्लेवात्स्की, चिंतु कृष्णमूर्ति जी और रमन महर्षि जी जैसे रहस्यवादी इस आंतरिक दृष्टि की पुष्टि करते हैं। यद्यपि मार्ग कठिन और कांटों से भरा है, तो यह ब्रह्मांड के हृदय और भीतर के हृदय की ओर ले जाता है। बौद्धिक नैतिकता जीने का एक प्रेरणादायक तरीका प्रस्तुत करती है। हम सब एक हैं और नैतिकता नियमों से कहीं अधिक इस बात पर केंद्रित है कि हम क्या बन रहे हैं। ये हमें मन और हृदय दोनों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। इस खंडित दुनिया में यह हमें अंतर्मुखी बनाती है। पहले अपने भीतर के घावों को भरे, फिर एकता से कार्य करें। यह जिज्ञासा को आमंत्रित करती है, क्या मुझे बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए? मैं प्रेम से प्रतिक्रिया दूं या भय से? करुणा के माध्यम से वे कार्यों का मार्गदर्शन करती है। अंततः यह एक शांत क्रांति है, नियंत्रण से चेतना की ओर, भय से प्रेम की ओर। अंतर्ज्ञान का एक मार्ग जो अधिक शांतिपूर्ण और संपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। धन्यवाद। थैंक यू अर्चना जी। और मुझे नहीं लगता कि वो आई हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। हर्षवर्धन जी, क्या आप, मैं पीपीटी ऑन करूं तो पढ़ पाएंगे? I should try it. So should I send you Mostly. or should I play here? You are on a mobile, that's why I'm asking. No, you can play here and we can come to the conclusion then.
and we can have some discussion also. Okay, you go ahead. In the meantime, I'll do some. Yes, yes. We can have this starting discussion just now. Yes, exactly. आपको कुछ कहना है और मृणाल जी, you want to add something? नहीं अर्चना जी आपको? नहीं, मुझे नहीं कुछ कहना है, क्योंकि कटरीना जी ने बहुत ही सुंदर और पॉइंट वाइज समझाया है, और जो इनके जो वाक्य हैं बहुत ही सुंदर हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। शुरुआत में लगता है नोएटिक प्रिंसिपल वगैरह, बौद्धिक चेतना बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर अंत में तो हमें क्या करना है वो सतत क्या है, हर वक्त हमको याद रखना है। और जो लास्ट के दो वाक्य में, अगर समय है तो मैं ये वापस पढ़ रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत इसका पूरा संक्षिप्त में बताया गया है। हमें अंतर्मुखी बनना है, पहले हमें अपने भीतर के घावों को भरना है, फिर एकता से कार्य करना है। और ये एक शांत क्रांति है, नियंत्रण से चेतना की ओर, भय से प्रेम की ओर। बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने बहुत ही समझाया है, मगर इसे बार बार लगातार हमें पढ़कर याद कर करके उसको जीवन में उतारना है। बहुत ही सुंदर समझा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से स्लाइड से 6 से या 7 से उन्होंने शुरू किया था जी, तो पढ़ना। तो वो पढ़ पाएंगे? सो लास्ट स्लाइड। आप पढ़ पा रही हैं क्या? जी, मैं पढ़ पा रही। जी, पढ़िए। Theosophical ethics based on universal principles. First, oneness of all life, beingness. There is an omnipresent, eternal, boundless, and immutable principle on which all speculation is impossible, since it transcends the power of human conception and could only be dwarfed by human expression of similitude. Second, consciousness, matter connection. Third, lawful, ordered universe. Fourth, harmony and sevenfold nature. Fifth, cycles and patterns in all things. Sixth, purpose behind life. Seventh, spiritual evolution. Ethics as inner transformation rooted in the cosmic principles. All life is one. It's a universal brotherhood. Karma, moral cause and effect. Inner wisdom guides beyond external rules. These are the noetic ethics living from inner unity. Fourth, thoughts, feelings shapes the world. Fifth, meditation redefines inner energy. Reincarnation, growth across lifetimes. Ethics is equal to inner transformation, not rules. Live by resonance, not reaction. Intuition reveals truth, quiet, steady, deep, aligned with the higher self and universal will. सर, ये पूरा समझाना है? Let us go with the explanation if it is possible. Next, please. Ji. Okay. तो यहाँ वो जो sir, should I read it? Sir, you're muted, sir. You can read, Archana ji. Go ahead. So, your individuality or personality they have spread. I'll read it from the top to bottom. Individuality, superior triad. It is immortal and enduring in that it includes Atman spirit, high self, absolute divine principle. Second, Buddhi, spiritual soul, the vehicle of your universal spirit. Third, higher human soul, higher ego. Lower is personal mind and lower ego. Disconnected by the antakarna, link between the higher and the lower manas, internal organ of heart and consciousness. Now we go to the personality. Personality, lower quaternary, it is new with each successive incarnation. Fourth is calm,
Animal soul, the seat of instinct, desires, and passions. Prana, life energy, vitality, portion of Jiva that is the physical body has appropriated. Linga, Sharir, the astral body or the etheric double, subtle, unseen double of the physical body. Sthula, Sharira, the physical body, molded on the linga cellular Sharir, vehicle of all the other principles during the life. This is the septenary constitution of the human being. Next And slide, it is please. taken from Key to Theosophy by H.P. Blavatsky, page 91 to 92, 135 to 136, and 174 to 176. Noetic ethics, the inner compass of conscious action. 1. We are one. Ethics starts within. Less about rules, more about becoming. Educate mind, heart, and spirit. Lead with soul, not ego. Action equals expression of inner growth. Real change begins with self-awareness. In every choice, pause, reflect, and act from compassion. A shift from fear to love, from division to unity. Live from the higher self, quiet, wise, aligned. Next, please. That's over. Thank you. Thank you, Archana ji. Yes, Sarshad bhai, any vision on this thing? Yes, actually, this particular topic is well explained in two categories. A noetic approach is very subtle way to understand it in a very profound way. Profound in the sense what as a theosophical literature students, if we go deeper into this study, we will have two doctrines, and that is explained by Madam Blavatsky. Doctrine of the mind and doctrine of the heart. So in noetic approach, this kind of first understanding in the philosophic way is described very deeply. Understanding the symbolical aspect is very ethereal kind of matter. And understanding the empirical matter, we can go deeper into our own psyche. And in this way, we can come to the particular state of mind, which is totally separate as well as aligned. Separate in the sense that it is the meditative mind, intuitive mind, it has proper understanding, and it can be trained well, it can acquire knowledge, and it can have all the futility of life. Separateness is not in the worldly sense. In the worldly sense, separateness is a seen. One who meditates on this separateness can come closer to the whole world, the whole consciousness. That means he feels that he is not separate. He is with one divinity. He is with that monad element. That is the one divinity. So what Ramana Maharshi, what Vivekananda, and what Krishnamurti described in the sense. So as students of theosophy, we should know this. And in the second category, we will have the mental capacity. Of course, psychologically, they are elaborated, well elaborated in the way that we can come to understanding. And here the example is taken from Mandukya Upanishad. This example is very apt, giving the example of two birds, two golden birds. One is having the joy in eating the fruit, but the second bird sitting at the upper level is just having the
inner understanding of relish, inner understanding of the satisfaction. So that is the Atmic force. So what the action takes place by the person, that is the outside, and he plays that particular role in the outside world. But the satisfaction, the kind of divinity, the kind of strength that is totally altruistic strength that is derived by that soul, that is more important. And in this way, that bird which symbolizes a kind of satisfaction. So in Mandukya Upanishad, this kind of explanation is given. Then in Bhagavad Gita also, in the 13th chapter, that Kshetra Kshetrajna, that is also a kind of explanation by Lord Krishna. So the kshetra, that is the field where we have to play our own role. And kshetrajna, that is our Atma. It is the Atman that knows everything, but we are not aware of it. So realization of that awareness, that is more important. So here it is explained so well. And categorically, we can have different aspects of attributes. So here also Lord Krishna puts a kind of emphasis on the attributes, but still Arjun doesn't understand the main particular force of Atman, that is the proper relationship with the divinity. So Yeah. in this way, when we come to know, we can have this understanding. I think this today's lecture, of course, Catalina could not join due to this technical problem of having the internet connectivity. She might be feeling somewhat sorry about that also. Yeah, But yeah, we say, because don't feel sorry. We are there with you. It is good, and we are really satisfied with the subject, and we are really keen in that proper understanding. So we are with you. And of course, in Marathi translation, Mrinal, you did so well. I like that. Of course, now understanding Marathi is somewhat easy for me. And Archana ji, in Hindi translation, you are very well, very versatile Hindi. You are all versatile in Gujarati, Hindi, Marathi, all the three languages, and of course, English is there. So I think this is really wonderful today, and we have really the golden moment today, the golden time. That is more important, what I should say, and it is very dear to my heart. Last time I could not attend, but this time I just have this opportunity today. Thank you very much. thank you, Ashwatan ji. Yeah, Malini ji, would you like to share something? Unmute, please. Yeah, she's unmuted. She was on YouTube, then she learned here. Okay. अब कैटलिना जी का तो फोन भी नहीं लग रहा है, कंप्लीटली लाइट गई है शायद. Malini ji, you should unmute. She's speaking, but she has not Yeah, unmuted. there is a button there. Just click on it. Oh, okay. Anyone else? I'm asking you to unmute. Just press on that. Are you seeing the prompt? No, no. Oh. Okay. Okay, 2 minutes. Yeah. Anyone else? Praveen ji, Raj ji, Anurima ji, or only Malini ji is there to speak? Okay. Mute. You're not able to unmute. Oh. Just click on that red button. The mic. On the Make right her corner. understand. Taralji, make her understand the symbol of the mic. No, she knows. She knows, okay, it's all right. There must be a technical thing, sometimes when you log in, Yeah. Okay, now she is frozen. yes. Okay, Archana ji, Ji, sir. I think go ahead with your. Sarve vai sukhina santu. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu.
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, everyone. Thank you. Thank you. And we meet Thank next you. Tuesday. Thank you. Mrinal, Thank you. wonderful. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Manal ji. Yes. Lord Thank you. Aya. See you. Okay. Blessed. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night.